Thank you, gentlemen. Let's take a few questions in English and then we will move towards the Urdu section. You want to ask the question? Shahid bhai, aap kar le pehle. Having played in the T20 Blast, you have the first-hand knowledge of all these England players. How tough they are going to be for Pakistan in this home series? I think England is one of the best white ball sides in the world. And having played county cricket over there this season, having looked at the standard of cricket, and we're not surprised at all with what England possess as a team. We get a lot of representation during the PSL. And they've always been important players. I mean, you can look at players like Alex Hales, Moeen Ali, David Willey played for us this year. So we know they are one of the best white ball sides in the world, and they will pose a very good challenge for us. So, I mean, it's an exciting time to be a Pakistani player. It's probably the ideal preparation to play one of the best sides in the world before the T20 World Cup. So I think we're very glad that we're playing a side like England. Yeah, gentleman at the back. Shan, how much a part did you playing in county cricket yourself, how much a part did that play in your recall for Pakistan, do you think, this year? I'd like to think so, that it was a very big stepping stone in terms of me making sort of into the T20 side over there. The PSL was a big step up. Performing on that level obviously gives you a lot of confidence, and then having played the Vitality Blast over there and getting some runs over there, I think that was very important to sort of just put my name out there. What was brilliant was I got to play a lot of cricket in county cricket. I figured myself out as a person, as a batsman. I felt that I owe give a lot of credit to Derbyshire, Mickey Arthur for the time that they invested me over there, and just being around all grounds, playing against players that have played for England, that are around in the England setup, international players that played the Vitality Blast as well. I think it's one experience that I will always regard when it comes to my development as a player. A lot of people think that, that there's too much cricket in England, but did you actually benefit from batting so much? I think as a batsman you can take that. Probably the worst bit was fielding that much. You don't like to be in the field for long hours, but when it comes to batting, I didn't mind playing so many games. And I think as a cricketer, when you play in, day out, the number of games you play, I played 15 T20s, I played about 8 4-day matches, 8 one-day matches. So I think as a cricketer, you learn a lot by playing a lot, and that's how you rectify your mistakes, that's how you make yourself a better player, and that's when you come across some very decent players and you learn from them. I mean, I witnessed one of the best T20 innings over there by Alex Hales. He scored 91 of 33 balls against us. So, I mean, that was, as a T20 batsman, that was a good innings to sort of see. Obviously, when you're in the opposition, it's not that good, but still, it was one of the best T20 innings that I've seen. Yes, sir. Hi, Shan. What does it mean to Pakistan cricket to have England here after all these years? I think as we look at it, 17 years it's taken. And then again, I've said this before, having one of the best white ball sides in the world to come here to tour Pakistan, it means a lot to the people of Pakistan. I think I just read a tweet yesterday that said Joss Butler is actually in Pakistan. So that signifies how much Pakistani people love cricket, how much they follow cricket, how much neutrally they follow cricket as well, that they want sides like England, Australia just toured Pakistan. Hopefully New Zealand's coming soon as well. So these are amazing signs for Pakistan and Pakistani cricket that we get to play with the best teams in the world. Last question in English, then we'll move to Urdu. Shan, could you just sort of talk us through how you see your own development as a T20 batter over the last few years, and sort of what you see your biggest strengths being at the moment? I think I've been very fortunate to play the PSL for 5 years in a row now. I've played for the same team. For the last year, we've had a coach like Andy Flower at Multan. I think I've developed my role quite a lot over there. I've batted with different partners. We've had really good T20 players actually playing in that setup. I mean, I've had James Vince, Riley Russo, Tim David, and then if you look at our local batsmen, we've had Rizwan, we've had Khushdil, we've had Soeb Masood. So I think I've picked up a lot from them. In terms of my own development, when I went to the Vitality Blast, I think my task was now, I was kind of on my own. I didn't have that luxury of big players that I had in Multan, but I was still able to learn a lot from a guy like Wayne Matson,
Mickey's been a very successful coach. We kept talking about my game. We try to take it to the next level, and I think learning never stops. I've got to some place now where I was 5 years ago. I mean, I'm happy with that, but as a player, the game's always evolving. You have to evolve as well. So I think my next step is to sort of meet the demands of international T20 cricket and hopefully make a good career out of it. Majid bhai or Shakur bhai? शान, पिछले काफ़ी अरसे से आप तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन लोग कहते थे कि शान जो हैं वो 5 डे क्रिकेट के प्लेयर हैं, 4 डे क्रिकेट के प्लेयर हैं. अब ऐसे फॉर्मेट में आना, पाकिस्तान टीम में आपने कमबैक किया, जो कहते हैं कि सबसे फास्ट फॉर्मेट है, हालांकि आपके को 11-1200 T20 में भी रन्स हैं. तो होम ग्राउंड पर खेलना, T20 में कमबैक करना, तो प्रेशर है कुछ? देखिए माजिद भाई, आई थिंक जो भी क्रिकेटर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क के लिए खेले, तीनों फॉर्मेट्स खेले. और जहाँ तक T20 की बात है, आई थिंक इस बार सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है कि इस साल में ही, अभी तक साल में 3 महीने भी बाकी हैं, 4 महीने भी बाकी हैं, उसमें ऑलरेडी कोई 36-37 गेम्स खेलने हैं T20 क्रिकेट के. तो जब आपने इतने सारे मैचेस खेले होते हैं, आप उसको और रन्स किए होते हैं उसमें, तो आई थिंक प्रेशर एक साइड पे डालना चाहिए और आपको ट्रस्ट करनी चाहिए अपनी एबिलिटी. जब आपने इतने मैचेस खेले होते हैं, रन्स किए होते हैं, आपका एक प्रोसेस होता है, आपका एक फार्मूला बना हुआ होता है, तो कोशिश यही होगी कि जो अच्छी चीज़ें की हैं, चाहे वो PSL हो, चाहे वो वाइटैलिटी ब्लास्ट हो, चाहे वो नेशनल T20 कप हो, कोशिश यही करूँगा कि जो अच्छी चीज़ें की हैं वो अपने साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर जाऊँ. और जहाँ लगेंगी कि इसमें मुझे अपने आप को बेहतर करना है, कुछ खामियाँ हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी बेहतर करूँ और जो पेस है इंटरनेशनल क्रिकेट की, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से खेलूँ. शान, आपकी जो वापसी हुई है, मतलब अभी तक यही कहा जा रहा था कि ऊपर की जगह नहीं बनती आपकी, जो जिस तरह रिजवान और बाबर खेल रहे हैं. मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है कि आप हो सकता है तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, तो इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी तक आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही है, आपने अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा रन्स आपके ओपनर की हैसियत से हैं, तो कितना ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए? ये चैलेंज हर क्रिकेटर के ऊपर होता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें टाइमिंग पर भी डिपेंड करती हैं. कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन इतना हाई होता है, प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रेफर्ड चीज़ होती है, आपकी इवन जगह जो होती है, वो टीम में नहीं बनती. मैंने हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है. जब मैं पहले साल मुल्तान का कप्तान भी बना था, तो 2 मैचेस बाद मैं नंबर 3 पे मैंने खेलना शुरू कर दिया था T20 में, जो मैंने पहले नहीं किया हुआ था. इस साल नेशनल T20 में भी मैंने कोशिश की कि जिस नंबर की बात हो रही थी, अपने आप को नंबर 4 पे लाया. थोड़ा उसको ग्रेजुअल किया कि जो मैं काउंटी के वनडे मैचेस खेलने गया था, उस पर नंबर 3 पे आया, ताकि जब मैं नेशनल T20 का वक्त जब आया, तो मैंने आराम से 3 से 4 पे अपने आप को एडजस्ट किया. और देखें, क्रिकेटर को एडजस्टमेंट करनी होती है. अगर सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, और जो टीम का रोल होगा, जो उस पोजीशन का रोल होगा, जो सिचुएशन का रोल होगा, मैं कोशिश करूँगा कि वही सीखूँ और वही अप्लाई करूँ. और चैलेंज हमेशा लिया है लाइफ में, और चैलेंजेस आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि जो रिवॉर्ड मिलता है वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना और कंप्लीट करने में मिलता है. शान, जैसे आपने कहा कि जो भी पोजीशन होगी, जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी, उस पोजीशन पे लेंगे, लेकिन फिर बाद में अगर रन्स नहीं होते तो फिर अक्सर, मैं आपकी बात नहीं कर, अक्सर खिलाड़ी फिर शिकवा भी करते हैं कि मुझे वो नंबर नहीं मिला जो मेरा था, जिस नंबर में मैं रन्स कर सकता हूँ. देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है. ये शान मसूद के बारे में नहीं है, पाकिस्तान के बारे में. पाकिस्तान की टीम है. मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है क्रिकेट खेलूं, पाकिस्तान के लिए खेलूं. मुझे जिधर भी जगह मिलेगी मैं खुशी से खेलूंगा. जहाँ मैं नहीं परफॉर्म करूँगा वो मेरी अपनी गलतियाँ होंगी, और पास्ट में भी जो परफॉर्म ना करने की पनिशमेंट्स मिली हैं वो मेरी अपनी गलतियाँ हैं. वो मैंने खुद ही उन गलतियों को कबूल किया और हमेशा कोशिश की है कि जो गलतियाँ की हैं उनको रेक्टिफाई करूँ, अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाऊँ. और जब तक मैं खेलता रहूँगा, जो भी फेलियर्स हैं या जो भी चीज़ है, वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जो टीम की रिक्वायरमेंट है, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँगा. लास्ट फॉर महमूद, जाहिद गफ्फार, बदियुज़्ज़मान और इमरान. अच्छा शान, अभी तक जो T20 क्रिकेट थी, ऐसा कहा जा रहा था कि बस ये दुप्पल क्रिकेट है जो मार धाड़ हो, लेकिन अभी हालिया दिनों में देखा कि बिल्कुल ये एक डिफरेंट किस्म की साइंस बनती जा रही है कि आप कीप मूविंग स्कोर करते रहें. आप इसको कैसा देखते हैं? देखें, मेरे ख्याल से कोई एक सही तरीका नहीं है खेलने का, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो. हर टीम का अपना ब्लूप्रिंट होता है, हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है. तो एज अ प्लेयर आपको सबसे पहले अपना रोल देखना चाहिए कि मेरा रोल क्या है, और फिर आपको उस रोल के हिसाब से खेलना चाहिए. हर दिन अलग होता है. किसी दिन आप 200 चेस कर रहे होंगे, किसी दिन आप 140 चेस कर रहे होंगे, किसी दिन आप
شاہین شاہ افریدی جیسا فاسٹ بولر کھیل رہے ہوں گے PSL میں, اگلے دن آپ راشد خان کو کھیل رہے ہوں گے. تو یہ الگ الگ چیلنجز آتے ہیں, اور آئی تھنک ایک پلیئر کو اس دور میں, کرکٹ کے اس دور میں, چاہے وہ ٹیسٹ ہو, ون ڈے ہو یا T20 ہو, آپ کو فلیکسیبل رہنا چاہیے. آپ انگلینڈ کی آپ ٹیسٹ ٹیم دیکھ لیں جس طریقے سے اب وہ کھیل رہی ہے, تو آپ کو بھی گیم کے ساتھ ایوالو ہونا چاہیے, آپ کو بھی گیم کے ساتھ فلیکسیبل رہنا چاہیے. شاید کافی عرصے بعد آپ کی واپسی ہوئی ہے ٹیم میں, تو اس دوران کبھی ذہن میں آیا کہ میری واپسی نہیں ہو سکے گی, تو یہ مرحلہ کتنا کٹھن تھا؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اپنے شہر میں میچز ہو رہے ہیں, تو آپ کے اوپر بھی پریشر ہے کہ فینس کا, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, کہ ٹکٹس وغیرہ آپ سے مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ٹکٹس کا کہتا ہوں, ٹکٹس کا تو ہمیشہ پریشر رہے گا, اور گھر والوں کو بھی ڈس اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ تو PSL میں ہی ہم نے دیکھ لیا تھا, اسپیشلی جو لاسٹ ایئر لاہور سے فائنل ہوا تھا. آئی ہوپ ایسی سچویشن واپس نہ آئے. دیکھیں, سیکنڈلی اس میں پریشر کی کوئی بات نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک کھیل ہے, آپ اسے انجوائے کرتے ہیں. جی تھاٹس آتے ہیں کبھی کبھار کہ شاید میرا کم بیک واپس نہ ہو, شاید میں پاکستان کے لیے کبھی واپس نہ کھیل سکوں, لیکن آئی تھنک مجھے زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 سال پہلے جو میرے سسٹر کے ساتھ واقعہ ہوا, اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ زندگی اصل میں کیا چیز ہے, کھیل سے بڑھ کے زیادہ چیز ہے. تو یہ کھیل کھیلنا, اس کھیل سے کمانا, اس کھیل سے اپنے ملک کے لیے کھیلنا, اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی زندگی میں. اس سے بہت بڑھ کے چیزیں, اور بہت خوش ہوں کہ جو بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو, چاہے وہ کاؤنٹی ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل ہو, کوشش کرتا ہوں وہی کھیلوں اور وہی انجوائے کروں. لاسٹ 2. اچھا شان, آپ کو کہا جاتا تھا کہ 4 ڈے 5 ڈے کے پلیئر ہیں, آپ نے بہت زبردست ڈیولپمنٹ کی ہے اپنی ایز اے پلیئر. کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا, اور کس چیز نے سب سے زیادہ مدد دی آپ کو T20 پلیئر بننے میں؟ دیکھیں, سب سے زیادہ موٹیویشن وہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کدھر ایز اے پلیئر لے کے جا سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو کتنا اسٹریچ کر سکتے ہو. اور میری یہی کوشش ہوگی, جب تک میں کرکٹ کھیلوں گا میں دیکھتا رہوں گا کہ میں کتنا امپروو کر سکتا ہوں. رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میری محنت یا میرا جو رویہ ہے گیم کی طرف وہ میرے ہاتھ میں. یہ میری ہمیشہ موٹیویشن رہی ہے. رزلٹ کو میں نے ہمیشہ سائڈ پہ رکھا ہے, اور کوشش یہ کی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پلیئر بناؤں. شان, بڑی محنت کی آپ نے, کاؤنٹی میں زبردست پرفارم کیا, اس کے بعد جو ہے ٹیم میں واپس آئے. باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شان مستقبل کا کپتان بھی ہے, کیا اس سلسلے میں کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. آئی تھنک ہر چیز ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہر سچویشن میں آپ کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اس وقت میں پاکستان ٹیم میں آئی تھنک میری پہلی T20 ریپرزنٹیشن ہے. مجھے اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو خوشی سے بنانا چاہیے. آگے کی چیزیں دیکھیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے آگے کیا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان ٹیم بڑے اچھے ہاتھ میں. ایک اچھا پاکستان کا پرابلی گریٹسٹ ایور بیٹسمین جو ہے وہ پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے. تو میرے کبھی بھی ایسے کوئی تھاٹس نہیں آتے. تھینک یو سو مچ. چھوٹی سی اپڈیٹ ہے, رضوان اور شانٹیٹ نہیں ہیں آج, دونوں تھوڑا سا ریسٹ کریں. شانٹیٹ کی تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی, اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.